So, hello everyone. So, now next part we are going to continue with the chapter 8 that is anomalous behavior of the water. तो पिछले क्लास में हमने देख लिया था प्रिंसिपल जो कि रेजुलिएशन था and we have also performed one activity regarding with that and we have also seen about some questions which leads to the concept of the anomalous behavior of the water. तो इस वीडियो में हम एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है उसके बारे में पहले जानेंगे क्या 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 यहाँ पर कहा गया है वो पहले देख लेते हैं इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स वाटर हाउएवर शोज अ स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर और जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड को अगर हम एक सर्टेन टेम्परेचर तक अगर हीट करेंगे सो इट गेट्स एक्सपांड्स और जब उसे कूल किया जाता है देन इट गेट्स कॉन्ट्रैक्ट सिंपल सा एग्जांपल है जो कि हम आइस क्यूब्स लेते हैं और आइस क्यूब को अगर हमने हीट प्रोवाइड की सो आइस क्यूब विल गेट कन्वर्टेड आफ्टर एक्सपांशन इनटू द स्टेट ऑफ द लिक्विड दैट इज वाटर और वाटर को अगर हम और फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं सो उसका उसके मॉलिक्यूल्स का अगेन एक्सपांड होता है एक्सपांशन होता है एंड ड्यू टू विच दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट दिस इज द सिंपल thing which we already know. तो आगे क्या है? Water, however, shows a except special and exceptional behavior if we heat water from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. So, this has been observed from the above experiment which we have performed, that is in the 5.2 that we have plotted the temperature graph. तो वाटर जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है एंड व्हाट इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर इज सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि यहाँ जो टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है यहाँ पर वाटर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है एंड आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट व्हेन इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द गैसियस स्टेट तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इज अगेन कांस्टेंट तो why this is happening that is only the anomalous behavior of the water which is shown so आगे क्या कहा गया है so water, however, shows a special and exceptional behavior if we heat water from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius. It contracts instead of expanding. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो कि है एक्सपांड होने की बजाय वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है and at the 4 degrees Celsius its volume is minimum due to the contraction and at the 4 degrees Celsius its volume is minimum. This is again one of the question which may ask in the exam that at 4 degrees Celsius its volume is minimum due to the contraction. So next, if the water is heated further, it expands and its volume increases. और अगर हम वाटर को आगे फर्दर और हीट करते गए सो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता चला जाएगा एंड द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम द 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज ओनली कॉल्ड एज द एनिमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर और जो कि वाटर का एक्सेप्शनल बिहेवियर जो कि हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में that is only the anomalous behavior of the water which is observed. So, if 1 kg of the water is heated from 0 degrees Celsius and its volume is plotted as a function of the temperature, we get a graph shown in the figure 5.4. So, if we are plotting the 1 kg of the water अगर हम लेते हैं और उसको हीट करते हैं from 0 degree Celsius and if we are plotting the graph as volume against the temperature, so we will get to see the plot of that graph as like. So, at 4 degrees Celsius, the volume of the water is minimum. It means that the density of the water is maximum at the 4 degrees Celsius. ये तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट किया गया है इट इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट तो चलिए समझते हैं ये क्या है तो एज हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया वॉल्यूम ऑफ द वाटर अगेंस्ट द टेम्परेचर दिस वी हैव प्लॉटेड और जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो मिनिमम है और हमने जो फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा था दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम और इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो डेंसिटी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के सो जैसे ही वॉल्यूम घटता जाएगा डेंसिटी विल बी गोज ऑन इंक्रीज मतलब वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज्यादा ऑब्वियस
It is in the inverse proportion. So at the 4 degrees Celsius, the volume of the water is minimum. It means that the density of the water is maximum at the 4 degrees Celsius. So the density of the water will be maximum at the 4 degrees Celsius. सो ये जो ऑब्जर्व है ये एनिमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर जो हमने यहाँ पर देखा सो इट हैज बीन ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ होप्स apparatus फर्स्ट टाइम सो स्टडी ऑफ द एनिमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर यूजिंग द होप्स apparatus सो क्या है ये द एनिमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर कैन बी स्टडीड विद द होप्स apparatus इन होप्स apparatus a flat bowl is attached to a cylindrical container as shown in the figure 5.5 सो हियर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5.5 फिगर में हुक्स एपरेटस की जो डायग्राम दी है सो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है और उसको एक अगेन सिलेंड्रिकल एक जो है वो एक अटैच किया गया है सो दैट इज द सिलेंड्रिकल कंटेनर सो there is a provision to attach thermometers above to measure the temperature T2 and below to measure the temperature T1 और यहाँ पर दो थर्मोमीटर हम देख सकते हैं कि अटैच किए गए हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि द फ्लैट बॉल ऑन द सिलेंड्रिकल कंटेनर वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर एंड मिक्सचर ऑफ द आइस एंड सॉल्ट दैट इज द फ्रीजिंग मिक्सचर और हम यहाँ पर देखते हैं कि वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर जो सिलेंड्रिकल कंटेनर यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस वन जो बाहर वाला सो यहाँ पर वाटर फिल किया गया है और जो ये दूसरा कंटेनर है मिक्सचर ऑफ द आइस एंड द सॉल्ट इस फ्लैट बाउल में यहाँ पर फिल किया गया है So, during the study of the anomalous behavior of the water using the Hooke's apparatus, temperature T1 and T2 are recorded after every 30 second. और after every 30 second के इंटरवल के बाद टेम्परेचर T1 और T2 का क्या है वो रिकॉर्ड किया गया है so the temperatures are plotted on the y-axis and the time in the minutes. On the x-axis, the graph is shown in the figure 5.6. Graph shows that initially both the temperatures T1 and the T2 are identical. However, as the time passes, temperature T1 of the water in the lower part of the cylindric cylinder decreases fast while the temperature T2 of the water in the upper part of the cylinder decreases comparatively slowly. However, once the temperature T1 of the lower part reaches 4 degrees Celsius, it remains almost stable at that temperature. So T2 decreases slowly to 4 degrees Celsius. Thereafter, since T2 starts changing rapidly, it records 0 degrees Celsius first, and after that, the lower thermometer T1 records 0 degrees Celsius temperature. The point of intersection of the two curves shows the temperature of the maximum density. So, as we have to plot the graph of the temperature T1 and the T2 of the two thermometers. So, जब हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और द टाइम so we will see here one of the point of the intersection as we can see here मतलब जब नीचे वाले जो थर्मामीटर यहाँ पर T1 है that when it is showing of the और थर्मामीटर T2 जो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा होगा लेकिन जो थर्मामीटर T1 में T1 होगा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहेगा दैट इज ओनली द कांस्टेंट टेम्परेचर विच वी हैव सीन और आगे क्या बोला गया है वो हम देखते हैं यहाँ पर हाउ कैन वी एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस सो initially the temperature of the water in the middle of the cylinder lowers due to the freezing mixture in the outer bowl और जो initially जो temperature of the water in the middle cylinder यहाँ पर जो flat bowl था उसका जो थर्मामीटर यहाँ पर T2 है सो उसका टेम्परेचर मेंटेन था दैट इज lowers due to the freezing mixture in the outer bowl सो इसका टेम्परेचर जल्दी से कम हो गया since the temperature of the water there decreases in its volume decreases and its density increases वही रिलेशन जो कि हमने पहले भी ऊपर देखा as at the 4 degree celsius the density of the water is the maximum so the water with higher density moves downwards. Therefore, the lower thermometer T1 shows a rapid fall in the temperature as this continues till the temperature of the water becomes equal to the 4 degrees Celsius. When the temperature of the water starts decreasing below 4 degrees Celsius, its volume increases and density decreases. Volume बढ़ेगा at the as the water starts decreasing below the 4 degrees Celsius. So density will go on decreasing.
It therefore moves in the upward direction. The temperature of the water in the upper part, T2, therefore decreases rapidly to 0 degrees Celsius. The temperature of the water in the lower part, T1, however, remains at 4 degrees Celsius for some time and then decreases slowly to the 0 degrees Celsius. तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा थ्योरी यहाँ पर जो एक्सप्लेन की गई है एक सिंपल सी है. सो वी हैव टू टेक वन, मतलब हमें एक सिलेंडर लेना है और उसमें वाटर फिल करना है एंड एक फ्लैट बाउल जो कि उसको अटैच होगा. सो उसमें फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? दैट इज द मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड द आइस. तो वो फ्रीजिंग मिक्सचर यहाँ पर डालना है एंड वी हैव टू अटैच टू थर्मोमीटर्स दैट इज T1 एंड द T2 हियर. और T1 और T2 का टेम्परेचर जो है वो हमें 30 सेकेंड्स के बाद आफ्टर इंटरवल हमें रिकॉर्ड करते जाना है एंड वी हैव टू प्लॉट कि टेम्परेचर क्या है. सो जैसा कि 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर T2 का जो टेम्परेचर है वो सडनली डिक्रीज हो रहा है. सडनली डिक्रीज बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर जो कि आइस और सॉल्ट का जो मिक्सचर हमने यहाँ पर डाला है उसकी वजह से जो T2 का टेम्परेचर है वो जल्दी से 0 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाएगा. और जैसे ही ये फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से जो वाटर है वो उसकी मतलब जो अपर लेयर का जो वाटर है वो जैसे ही ठंडा होता चला जाएगा. सो एज इट विल गोज ऑन, डेंसिटी विल गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू विच वो नीचे आएगा. लेकिन तब तक जो नीचे का जो वाटर है वो दैट विल ट्राई टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर एज ऑफ द 4 डिग्री सेल्सियस. और यही जो प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है जो एक्वेटिक एनिमल्स जो कोल्ड रीजन में रहते हैं दैट दे सर्वाइव बिकॉज ऑफ दिस ओनली द एनिमल्स बिहेवियर ऑफ द वाटर. नहीं तो वो मर जाते. एज बिकॉज ऑफ दिस एनिमल्स बिहेवियर ऑफ द वाटर, सो जो यहाँ पर आइस की जो लेयर हम यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हैं दैट दिस आइस लेयर इज फॉर्म ऑन द surface of the water then also the at the ground level. So there is the existence of the water and due to which the aquatic animals able to survive in that particular water. और इसी के वजह से जो एक्वेटिक कोल्ड रीजन में जो एक्वेटिक लाइफ है वो सस्टेनेबल है. नेक्स्ट इज द ड्यू पॉइंट एंड द ह्यूमिडिटी. About 71% of the earth is covered with the water. Due to the constant evaporation of the water, water vapor is always present in the atmosphere. Amount of the water vapor in the atmosphere helps us to understand the state of the daily weather. The presence of the vapor in the air makes it moist. The moisture in the atmosphere is called as the humidity. अरे humidity की यहाँ पर definition जो यहाँ पर दी गई है. The amount of the water vapor which is present in the atmosphere that helps us to understand about the daily weather. और जो presence of the water vapor जो है air में जिसकी वजह से एयर मॉइस्ट हो जाती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमिडिटी. सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन of the humidity which may ask in the exam. For a given volume of the air at a specific temperature, there is a limit on how much water vapor the air can contain. If the amount exceeds this limit, the excess water vapor is converted into the water droplets. When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. Amount of the vapor needed to saturate the air depends on the temperature of the air. If the air temperature is low, it will need less vapor to saturate the air. For example, if the temperature of the air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 grams of the water per kilogram of the dry air without condensation. If the amount of the vapor exceeds this limit, the additional vapor will condense.